बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ड क्लीन, CLEAN, क्लीन। वर्ड क्लीन का मीनिंग होता है साफ़ करना। वर्ड क्लीन का मीनिंग होता है साफ़ करना। वर्ड क्लीन का मीनिंग होता है साफ़ करना। अब हम वर्ड क्लीन की बतौर वर्ब की फॉर्म्स चेक करेंगे। इसकी बेस फॉर्म होती है V1 क्लीन, बेस फॉर्म V1 क्लीन, पास्ट सिंपल V2 क्लीन्ड, पास्ट सिंपल V2 क्लीन्ड, और पास्ट पार्टिसिपल V3 क्लीन्ड, पास्ट पार्टिसिपल V3 क्लीन्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 क्लीनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 क्लीनिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर V5 क्लीन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर V5 क्लीन्स। और अब हम ये थी वर्ब की फॉर्म्स, और अब हम इसी वर्ब का यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू 12 टेंस हम इसका यूज़ भी चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन देखेंगे, फिर सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, तो पहले सिंगुलर फिर प्लूरल। प्रेजेंट इंडेफिनिट आई क्लीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई क्लीन। Present continuous, I am cleaning. Present continuous, I am cleaning. Present perfect tense, I have cleaned. Present perfect tense, I have cleaned. Present perfect continuous, I have been cleaning. Present perfect continuous tense, I have been cleaning. और अब past tense, past indefinite, I cleaned. Past indefinite, I cleaned. Past continuous tense, I was cleaning. Past continuous tense, I was cleaning. Past perfect tense, I had cleaned. Past perfect tense, I had cleaned. Or past perfect continuous tense, I had been cleaning. Past perfect continuous tense, I had been cleaning. और अब future tense, future indefinite। अच्छा, आई फ्यूचर में आई के साथ शैल और विल दोनों यूज़ होता है और दोनों ही सही रहता है। मैं यहाँ पे विल यूज़ कर रही हूँ। आई विल क्लीन, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल क्लीन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई विल बी क्लीनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई विल बी क्लीनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव क्लीन्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव क्लीन्ड। फ्यूचर परफेक्ट continuous tense, I will have been cleaning. Future perfect continuous tense, I will have been cleaning. तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। और अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वी के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी क्लीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी क्लीन। Present continuous tense, we are cleaning. Present continuous tense, we are cleaning. Present perfect tense, we have cleaned. Present perfect tense, we have cleaned. Present perfect continuous tense, we have been cleaning. Present perfect continuous tense, we have been cleaning. Or a past tense, past indefinite, we cleaned. Past indefinite, we cleaned. Past continuous tense, we were cleaning. Past continuous tense, we were cleaning. Past perfect tense, we had cleaned. Past perfect tense, we had cleaned. Past perfect continuous tense, we had been cleaning. Past perfect continuous tense, we had been cleaning. अब फ्यूचर टेंस। अच्छा, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है और विल भी इस्तेमाल होता है, दोनों सही रहते हैं। मैं यहाँ पे विल यूज़ कर रही हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट, वी विल क्लीन। फ्यूचर इंडेफिनिट, वी विल क्लीन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वी विल बी क्लीनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वी विल बी क्लीनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी विल हैव क्लीन्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी विल हैव क्लीन्ड। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, we will have been cleaning. Future perfect continuous tense, we will have been cleaning. ये तो एग्जाम्पल से फर्स्ट पर्सन
आई और वी के साथ। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स सेकंड पर्सन यू के साथ। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यू क्लीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट यू क्लीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यू आर क्लीनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यू आर क्लीनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू हैव क्लीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू हैव क्लीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यू हैव बीन क्लीनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यू हैव बीन क्लीनिंग। और अब हम देखेंगे इसका पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट you cleaned, past indefinite you cleaned, past continuous tense you were cleaning, past continuous tense you were cleaning, past perfect tense you had cleaned, past perfect tense you had cleaned, past perfect continuous tense you had been cleaning, past perfect continuous tense you had been cleaning। और अब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट you will clean, future indefinite you will clean, future continuous tense you will be cleaning, future continuous tense you will be cleaning, future perfect tense you will have cleaned, future perfect tense you will have cleaned, future perfect continuous tense you will have been cleaning, future perfect continuous tense you will have been cleaning। ये हो गया सेकंड पर्सन you। और अब हम एग्जाम्पल देखेंगे थर्ड पर्सन के साथ। तो शुरू करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट शी क्लीन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट शी क्लीन्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शी इज़ क्लीनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शी इज़ क्लीनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शी हैज़ क्लीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शी हैज़ क्लीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस she has been cleaning, present perfect continuous tense she has been cleaning। और अब past tense। past indefinite she cleaned, past indefinite she cleaned, past continuous tense she was cleaning, past continuous tense she was cleaning, past perfect tense she had cleaned, past perfect tense she had cleaned, past perfect continuous tense she had been cleaning, past perfect continuous tense she had been cleaning। और अब future tense। future indefinite she will clean, future indefinite she will clean, future continuous she will be cleaning, future continuous tense she will be cleaning, future perfect tense she will have cleaned, future perfect tense she will have cleaned, future perfect continuous tense she will have been cleaning, future perfect continuous tense she will have been cleaning। और अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आमना क्लीन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट आमना क्लीन्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आमना इज क्लीनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आमना इज क्लीनिंग, present perfect tense Amna has cleaned, present perfect tense Amna has cleaned, present perfect continuous tense Amna has been cleaning, present perfect continuous tense Amna has been cleaning। और अब past tense। past indefinite Amna cleaned, past indefinite Amna cleaned, past continuous tense Amna was cleaning, past continuous tense Amna was cleaning, past perfect tense Amna had cleaned, past perfect tense Amna had cleaned, past perfect continuous tense Amna had been cleaning, past perfect continuous tense Amna had been cleaning। और अब future tense। future indefinite Amna will clean, future indefinite Amna will clean, future continuous Amna will be cleaning, future continuous Amna will be cleaning, future perfect tense Amna will have cleaned, future perfect tense Amna will have cleaned, future perfect continuous tense Amna will have been cleaning, future perfect continuous tense Amna will have been cleaning। तो ये हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एग्जाम्पल्स। और अब हम इसी का एग्जाम्पल देखेंगे दे के साथ। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट
they clean. Present indefinite, they clean. Present continuous, they are cleaning. Present continuous tense, they are cleaning. Present perfect tense, they have cleaned. Present perfect tense, they have cleaned. Present perfect continuous tense, they have been cleaning. Present perfect continuous tense, they have been cleaning. Or a past tense, past indefinite, they cleaned. Past indefinite, they cleaned. Past continuous tense, they were cleaning. Past continuous tense, they were cleaning. Past perfect tense, they had cleaned. Past perfect tense, they had cleaned. Past perfect continuous tense, they had been cleaning. Past perfect continuous tense, they had been cleaning. Or a future tense, future indefinite, they will clean. Future indefinite, they will clean. Future continuous tense, they will be cleaning. Future continuous tense, they will be cleaning. Future perfect tense, they will have cleaned. Future perfect tense, they will have cleaned. Future perfect continuous tense, they will have been cleaning. Future perfect continuous tense, they will have been cleaning. तो ये हो गया आज का वर्ड क्लीन और उसकी यूज़। और आई होप कि आपको ये वर्ड क्लीन और इसका यूज़ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।